वेलकम बैक टू कोड टेस्ट। आज हम करने वाले हैं आर्केड February 2026 स्प्रिंट 1 यानी कि उसका क्विज नंबर 1। फर्स्ट क्लिक स्टार्ट लैब। नाउ इस लैब में हमें कोई क्लाउड कंसोल खोलने की जरूरत नहीं है, एज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि हमें बस 10 मिनट्स के लिए इस लैब को ओपन रखना होगा एंड माई लैब कंप्लीट हो जाएगी। हाउएवर यहाँ पे क्विज है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं टू चेक योर नॉलेज एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। सो हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। अब होता यह है कि अगर गलत भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पॉइंट्स आपको पूरे मिलेंगे एंड लैब कंप्लीट ही हो जाएगी 10 मिनट में। सो माइट एज वेल उस 10 मिनट का यूज करके हम क्विज करें। सो लेट्स डू इट। How will you create a new Linux server instance in Google Cloud using the console? So I think for that we should use the compute engine. All right. In Google Cloud, what does the machine type configuration primarily determine? I think it is the OS version? No, actually disk type. Okay, let's see if it's the OS version. It is not. Then hardware resources. Yes, it is hardware resources. Now, next question. Which gcloud command is used to display all the configuration properties of your current environment? I think it is this. Which gcloud command is used to view a list of active account names in your environment? And yes, it's done. Now, on to the fifth question. In Google Cloud, how will you create a new persistent disk in a specific zone using the command line? So we just created it. And which Google Cloud command is used to attach an existing persistent disk to a virtual machine instance? Okay, so this one was wrong and it was done. Now you can find a playlist of the whole sprint one with all the three other labs of it attached to it, and you can complete it from there. After 10 minutes are complete, you can just simply end lab and it will be completed. For checking, you can go back and check that it is completed.